a quiz function. So today we are going to do some quizzes and we are going to solve those questions that are given in the textbooks or maybe out of that so that you guys can solve. So everyone ready? Can we start? Right, so before starting, let me tell you something about the platform Swiflearn. What is this platform and what do we do here? So here are some key features that are known to you beforehand. If not, so I'll put that light again so that you know what is the platform Swiflearn all about. So Swiflearn platform says we try harder. So by saying that, here the teachers are working harder with the students so that they can have a better future, a good result altogether. How are that possible? There are some key features that help us know and determine that whatever we are saying, it's true. So let's go to those points and see, are we saying it right or not? So the first point here is that we have 100% live and interactive class. Right now I am live and I can see you, so many of you live here. But before, when or maybe later, when I'm not there live, still you're watching this video. So maybe there are some of the questions that you're not able to solve. उसमें कहीं ना कहीं doubt होगा, right? जब उन questions में doubt है तो अब क्या करें? अब मैम से तो पूछ नहीं सकते, मैम तो लाइव नहीं है. So that is a problem that we know. आप बच्चों को होती है, right? Hi Jasmeer, Sameer also. Good afternoon. So इससे आपको जो प्रॉब्लम होती है जब 100% हम लाइव वहाँ पे नहीं होते, तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म ने हमारे को आपके सामने लाइव प्रेजेंट करते हैं. तो वहाँ पर आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो टीचर्स से और आप इंटरैक्ट कर सकते हैं. अब बेनिफिशियल पॉइंट क्या है, importance क्या है कि maximum of 6 students would be there. So by saying that there will be only maximum of 6 students that would be present in a batch. जब बच्चे कम होंगे तो टीचर हर एक पे कॉन्सेंट्रेट कर सकती है, राइट? जब टीचर हर एक पे कॉन्सेंट्रेट कर सकती है तो जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं जो हमें लगता है कि हमें पूछने चाहिए या नहीं, टीचर्स वो भी आइडेंटिफाई कर लेती हैं और वो भी आपके क्लियर कर देती हैं. So don't you think when the small number of group of students are sitting together, the concentration level becomes high and the teacher is able to know what are your strong points as well as what are your weaker points, right? Not only this, not only the teachers take that confidence and are able to emphasize on the topic, but there is academic mentor team. So there is a team that keeps a track of all your classwork or homework, your transactions, how do you do it. So everything, your way you communicate with the teacher, the way you are giving the answers in the class. So for that, what you have to do, you need to be enrolled with us and how the mentor team is taking everything. जैसे ही आप enroll होती हो तो एक mentor team आपका सब कुछ track करती है. आपको वो track करने की जरूरत ही नहीं कि आपको ये topic अच्छे से आता है या नहीं. There is a team that is keeping track on your classwork, homeworks, your assessments as well as the way you are doing, the time in which you are doing. वो भी importantly notice हो जाता है. Alright, not only this, they also cover syllabus as per school exam schedule. So yes, आपका school exam Monday को है, आप हमें पहले ही बता दोगे, हम वो वाला topic भी cover करेंगे. ऐसा नहीं कि मैम अपने ही तरीके से कर रही है. We'll make sure that you are before your exams, the topic have been taught for you. That is made sure from our side too. We also handle custom requests. Guys, custom request वो है चीज जैसे अब स्कूल में हमें एक टेक्स्ट बुक मिलती है, राइट? पूरे ईयर में हमें एक टेक्स्ट बुक मिलती है, हमें वो ही पढ़ना पड़ता है. बट अगर मेरा मन कर रहा है कि मुझे साइंस को और डेप्थ पढ़ना है या फिर मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ बट मुझे और जानना है कि और क्या हो सकता है नेक्स्ट क्लास का मैं पहले ही पढ़ना चाहती हूँ. सो फॉर दैट ऑल्सो दिस प्लेटफॉर्म इज ओपन. यू जस्ट नीड टू टेल अस. हियर द टीचर्स विल टीच यू वट एवर यू वॉन्ट टू नो अबाउट एक्स्ट्रा फ्रॉम द टॉपिक. सो जो टेक्स्ट बुक्स में वो तो हम स्टडी कराएंगे. उसके अलावा जो आपको पॉइंट्स और जो चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए या जो लास्ट ईयर आपके टॉपिक्स अच्छे से कवर नहीं हुए, जो मे बी इस ईयर आपके लिए कनेक्टेड हो, आप वो भी पढ़ना चाहते हो, सो वी विल ऑल्सो डू दैट. दैट इज what we say, we handle custom requests. तो सब कुछ ही पढ़ाई के बारे में बात हो रही है जहाँ पे आपको सब कुछ जो पढ़ाई से रिलेटेड है, आपका रिजल्ट, आपका क्लास वर्क, आपका होमवर्क, आपके इंटरेक्शन विद द टीचर्स, सब कुछ पढ़ाई के बारे में इतना सिंसियरली बात करते हैं. तो यही चीज, ये सारे पॉइंट्स ये प्रूव करते हैं कि इंडियाज मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन इज नॉट ओनली and not another than just Swiflearn. So at this platform, it's known for its sincerity and it's known as India's most sincere learning destination for grades 1st to 10. So all of you guys who are in 1st and 10, this is the time for you to book a free trial class. So I'm saying that the trial class is absolutely free. Go and test it out. By saying that,
मैम के ऊपर चेक करना है कि मैम जो भी बोल रही है वो सच है या नहीं. Alright, so Sameer, thank you so much. You subscribed it, you liked it, and your notification is done. That's really very good. And the guys, I'll put a light again on the key features कि आपको progress report statistics की तरह से दिखाई जाएगी, जहाँ पे आपका progress दिखाया जाएगा. Drop भी होगा क्योंकि human में गलती होती है, but whenever there is a drop, there is a lateral. Chun chun chun. That means the teacher has to work harder. Remember, we said the teacher works harder. So here we go. यहाँ पे teachers के लिए red alert हो जाता है और teachers को work करना ही पड़ता है ताकि आपकी performance, आपका ग्राफ दोबारा excel करे, right? Alright, not only this, they also we here conduct SAT exams होते हैं, Swiflearn Academic Test Series exam, जो कि throughout the world सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं. स्कूल एग्जाम्स भी होते हैं बच्चा, बट वो लिमिटेड बच्चों में होते हैं, राइट? हम उनके अंदर compete करते हैं और हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा रिजल्ट करा और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. बट SAT एग्जाम्स इज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म Swiflearn की तरह, और वहाँ पे इंटरनेशनली सारे बच्चे आपके एज के अटेम्प्ट करते हैं, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आप एग्जैक्टली ग्लोबली कहाँ स्टैंड करते हो, राइट? आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है. प्रिपरेशन बेस्ट है तो भी प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रिपरेशन कम है अगर अपना स्कोर को बीट करना है तो भी प्रैक्टिस चाहिए. सो वी नो दिस, यू नीड प्रैक्टिस टेस्ट. सो दैट्स व्हाई वी आल्सो ऑफर यू अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट. देयर इज नो लिमिट. वी वोंट से दैट 10 पेपर्स दे दिए एक चैप्टर पे बहुत है. नो, यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. विल गिव यू वैरायटी एंड डिफरेंट वेज ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड सो दैट यू कैन डू द स्कूल एग्जाम्स एज वेल एज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज. Alright, अब एग्जाम्स जो होते हैं, स्कूल एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो दीज प्रैक्टिस टेस्ट इंक्लूड्स बोथ ऑफ द थिंग्स, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, ताकि आपके स्कूल एग्जाम्स भी अच्छे से हो और आपके नॉर्मल एग्जाम्स भी अच्छे से हो. Alright, great. Now I hope you all will enjoy this session with me today, and we will do some exciting quizzes and understand the chapter altogether. Before that, you need to subscribe to the YouTube channel, press on the bell icon so that you don't miss any update. So guys, you don't miss the next session and the new topic that I'm going to come up with. You can also give us the suggestions in the comment box. So comment box आपके लिए open है. आप ये बता सकते हो कि मैम मुझे वाला चैप्टर अच्छे से नहीं आता, so we'll bring that chapter in the next time, so you can go that. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रायल क्लास का लिंक को आप क्लिक कर सकते हो, आपको फ्री ट्रायल क्लास मिल जाएगी, उसके लिंक पे आप फिल कर सकते हो. उसके बाद आप उस वेबसाइट से इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस टेस्ट है वो भी कर सकते हो. सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल होगा. Alright, so let's start today's topic altogether. It's triangle and section 3. हम फर्स्ट और सेकेंड ऑलरेडी कर चुके हैं. जिन्होंने नहीं ये देखा है, डोंट वरी, आज की सेशन के आप दोबारा जाके रिवाइज कर सकते हो. बट आज का सेशन भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उन चीजों को पहले रिवाइज करेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो इट विल बी द टाइम फॉर यू टू रिवाइज ऑल द थिंग्स क्विकली. Alright, so here we go. Objective is a mind mapping of triangles, subjective assessments and multi-choice questions. So today is a quiz time. So guys, everybody ready? Let's see who all can fill up the comment box, the chat box as quickly as you can solve and give me the answers. So it's a competitive time, so we all are playing game together. So let's see who wins this game. Alright, so first thing, let's revise. Mind mapping of triangles क्या है, उसके अंदर हम क्या बात करेंगे, क्या होता है triangle और हमें कैसे बोलते हैं. So there are some 3 things that we know, and that is why we call what are triangles and what is congruency. So let's revise the things. And guys, you want, you can take a screenshot because these are the points that are required for you to brush up before the exam. So exam से आने पहले आप ये चीजें रिवाइज कर लोगे तो आपका नोट्स जो आप बनाते हो उसके भी बनाने के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. So this platform makes sure that you don't waste even a single precious minute of your life. Everything is prepared for you. Just need to revise the things and relax the rest of the time. How easy and how quick it would be, right? So let's start with the topic. It says closed figures. So triangle exactly होता क्या है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बना हुआ है. तो ये क्या है, ये क्लोज फिगर है. क्लोज फिगर है कितने साइड से, स्ट्रेट लाइन्स ऑफ 3 लाइन्स. 3 लाइन्स को इकट्ठे ज्वाइन करके उसको क्लोज फिगर बनाया जाता है, राइट? नाउ व्हेन आई से देयर आर 3 स्ट्रेट लाइन्स, जब 3 स्ट्रेट लाइन्स इकट्ठे ज्वाइन होती है ना तो क्या बनता है बच्चा, एक बनती है साइड. सो दिस इज इसे ए बी सी अगर मैं ट्राइंगल लिख लेती हूँ, ठीक है. सो ए बी साइड हुई, बी सी साइड हुई और ए सी साइड हुई. तो 3 साइड्स हुई. और साथ में एंगल्स. एंगल्स कौन से होते हैं, ये जो एंगल्स जो 2 आर्म्स हैं जो मिलके बीच में जो बनाती हैं इनको एंगल्स कहते हैं, राइट? और जो ये पॉइंट है जो कॉर्नर्स हैं उनको बोलते हैं वर्टिसेस. So simple as that. Whenever there are 3 lines, straight lines meeting together, they may have 3 sides, 3 angles, 3 vertices and become a triangle. Simple as that.
गुड. सो अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट की. उसको रिवाइज कर लेते हैं. कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट आर एनी थ्री पैरामीटर्स. कोई भी थ्री पैरामीटर्स अगर ट्रायंगल अगर सेम है दूसरे ट्रायंगल से तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं. अब वो थ्री पैरामीटर्स कौन से होने चाहिए और कौन से थ्री पैरामीटर्स से हम एक्चुअली डिटर्मिन कर सकते हैं कि हाँ वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. जस्ट रिपीटिंग अगेन, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है बच्चा? जैसे ये हैंड है और उसके ऊपर एग्जैक्टली हैंड एग्जैक्टली आ रहा है, राइट? सो ये इसके ऊपर कर रहा है, इसके डायमेंशन सेम है, सब कुछ है, मतलब एग्जैक्टली उसके ऊपर कॉपी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी. ऑलराइट. तो जैसे मैं एक के ऊपर एक रखूंगी तो मेरे को कहीं भी चीज कोई भी बड़ी हुई नहीं लगती, एग्जैक्टली सेम आता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट. सो कॉन्ग्रुएंसी के जो फैक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंसी रूल्स? सो द फर्स्ट रूल इज SAS. सो रिमेंबर, आई विल मेक दैट रूल एक्सप्लेन यू अगेन. एंड आपको ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है बच्चा, क्योंकि नहीं तो हम रीजनिंग तो सही लिखते हैं, हमें लगता है हम सही लिखते हैं, बट वो रीजनिंग सही नहीं होती और मैम उसके मार्क्स कट कर लेती है. सो लेट्स रिवाइज. व्हाट डू वी मीन बाय दिस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ SAS? Alright, so I'll tell you again what are angles just here enough. So SAS मतलब बच्चा S होता है side, alright, and A होता है angle, okay, and S again होता है side. देखो ये दोनों जो साइड्स हैं, ए बी आपको पता है साइड है, BC साइड है, तो ये जो माउथ ओपन हो रहा है ना, जैसे हम माउथ ओपन करते हैं या फिर क्रोकोडाइल माउथ ओपन करता है, राइट? हम ऐसे बनाते थे ना जब छोटे होते हुए कि कौन सा ग्रेटर है, तो जब हम एक ग्रेटर साइन बनाते थे तो इसके अंदर बीच में इसको क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल माउथ. तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एंगल. ओके, सो दो आर्म्स के बीच के अंदर जो रेशियो के अंदर आता है उसको बोलते हैं एंगल्स. सो ABC है, B एंगल होगा, A एंगल ABC, एंगल BAC एंड एंगल ACB. सो ऐसे थ्री एंगल्स हमारे डिटरमिन होंगे. So two angles are congruent if the two sides and the included angle of a triangle are equal to the side of the included angle of the another triangle. कहने का मतलब बच्चा ये है कि अगर हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ठीक है, हमने एक ट्रायंगल लिया ABC और हम दूसरा ट्रायंगल जो है वो ले लेते हैं PQR. Alright, so first one will go slow just to revise that, and the next one will start the speed up so that you will understand. Okay, so हम revise कर रहे हैं PQR. अब PQR में एंगल P होगा QPR, एंगल PQR और एंगल PRQ. Alright, so we have these three angles. Perfect. Now coming on to the sides, it's AB, ये PQ साइड है, ये BC और ये QR साइड है और ये AC थर्ड साइड एंड PR is a third side. Alright, so अब बात करते हैं हम जिसकी बात कर रहे हैं SAS. SAS का मतलब क्या है? जब हमारे दो साइड्स, कौन सी साइड्स हो गई? या फिर ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, एंड इंक्लूडेड एंगल मतलब कि एंगल B एंगल Q के इक्वल होता है, तब उसको बोलते हैं SAS. तो साइड एंगल साइड, तो दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल अगर हमारे इक्वल होता है दूसरे ट्रायंगल से, देन वी कॉल इट दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS. Clear guys? Okay, moving on to the next one. What does next congruency rule says? ASA. ASA का मतलब क्या होता है बच्चा? ASA means that the angle, this is A stands for angle, then a side and then an angle. That means अगर मेरा एक ये triangle है ABC, alright? तो मेरा angle B, एंगल C और BC अगर ये वाला ही सेम चीज मेरे PQR से मीट कर रहा है, मीन्स एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, BC इज इक्वल्स टू QR. तो मतलब दो एंगल्स हो गए और उसके बीच की साइड की अगर हम बात करते हैं, देन दैट मीन्स दैट द एंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय द रूल्स ऑफ एंगल साइड एंगल. सो एंगल हो गया बीच का साइड देन द एंगल. सिमिलरली इसमें क्या था? साइड बीच का एंगल देन द साइड. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. जस्ट रिमेंबर दैट अगर ये साइड बीच की नहीं है, साइड अलग जगह पे है, तो देन दैट बिकम्स टू एंगल एंड अ साइड विच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. इट्स नॉट इंक्लूडेड. सो दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज angle side. Angle side. Alright guys, I hope you are enjoying and you're understanding. Kindly go and subscribe to the channel, press on the bell icon so that you don't miss any update and you know when is the next topic and chapter coming all together. Alright, so it's angle side congruency rule. So two angles are congruent if the two pairs of angles and one pair of congruent sides are equal. इसका कहने का मतलब है बच्चा कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल ले लेते हैं दोबारा से, ट्रायंगल्स की स्ट्रेट होती है लाइन, कर्वी नहीं होती, सो लेट मी मेक अ स्ट्रेट लाइन. ऑलराइट,
So we have this side. Okay, so let's do it once again. One is this side, and the other one is this. All right, so we have a triangle ABC and PQ and R. So two triangles are congruent if the pair of angles, so कौन से angle? Angle B angle Q के equal होगा. Angle B is equals to angle Q. Angle C is equals to angle R. Okay, हमने ये भी बात करी थी कि angle C is equals to angle R. But in this case, the side is different. So we cannot say BC is equals to QR. In that case, we'll go to the before congruency altogether. तो हम दोबारा उसी पे चले जाएंगे. तो इसके अंदर हमारे पास दो conditions होती है, या तो AB is equals to PQ हो, या फिर if we can have both the situations और दोनों में congruency हम prove कर सकते हैं. AC is equals to PR. So अगर इन दोनों में से ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, otherwise ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, any one of the condition is satisfied and the two angles are equal, then we call it A. As simple as that. All right, so I hope you all can hear me now. Yes, all right. So it's side, side, side congruency rule. So by saying that side, side congruency rule, if three sides of a triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two sides are said congruent. So एक side अगर दूसरे side के equals हैं, जैसे three sides of a triangle ABC, मतलब AB, side of AB is equals to PQ, side of BC is equals to QR, and side of AC is equals to PR. That means the triangles are congruent altogether. Simple as that. Moving on to next one, it says right angle congruency rule. So मतलब right angle congruency rule RHS. So इसके अंदर right hypotenuse S side होता है, मतलब कि right angled. एक तो R से right angle बोलता है, H से hypotenuse and S से side. तो simple है, right angled है तो वो right angle triangle के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक angle तो 90 डिग्री होगा. Second condition says hypotenuse. अगर hypotenuse दोनों के equal होने चाहिए और कोई एक side equal होनी चाहिए तो हम दोनों triangles को congruent कह सकते हैं. So specially remember hypotenuse होना बहुत जरूरी है, दोनों साइड से हम ये चीज प्रूव नहीं कर सकते guys. Alright, so now let's solve some questions and see how are we going to solve these things. So here we come with the first question that we left in the last class. So हमने last class में ये वाला question जो था उसको हमने छोड़ दिया था. Let's see how are we going to solve these questions. So in the following figure, ABC is an equilateral triangle in which PQ is parallel to AC. तो हमने बताया था कि ये वाली लाइन जो है parallel है इसके. हमने AC को एक्सटेंड कर दिया पॉइंट R पे, so that CR is equal to BP. तो हमें ये भी चीज पता है. Alright, now we have to prove QR bisects PQ. मतलब QR जो है वो bisect करता है PQ, मतलब कि हमारी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होनी चाहिए. This they want to us prove. So this was a question that was given to you. Were you able to visualize and see how are we going to solve? Can I have those answers? What did you thought that what is all about? So if you know it, then it's okay. Otherwise, we'll start and do this question all together. So anyone who was able to solve this question before? All right, so let's do this question together. Okay, so here we go. अब triangle की बात करते हैं. उसने हमें बताया हुआ है it's an equilateral triangle. Okay, so I'll explain it again. Don't worry. So I'm just explaining this question. It says that PQ is parallel to AC. Parallel हमें बताया हुआ है. हमें ये बताया हुआ बच्चा कि BP equal to CR. Okay. Equilateral triangle means all the angles are equal and all the sides are equal. As simple as that. तो all angles कितने होते हैं? 60 degree के. We know this. Any doubt in that? No. Unequilateral का ये भी पता है कि AB is equals to AC is equals to BC. क्योंकि ये चीज तो मेरे को ऑलरेडी गिवन है. दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो मुझे पता है सारे एंगल्स भी इक्वल है एंड सारे साइड्स भी इक्वल है. सिंपल एज दैट, राइट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, इट सेज दैट QP is parallel to AC. It's given QP is parallel to AC. When these two angles are parallel, these two lines are parallel, तो मतलब ये लाइन अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, so what will happen guys? This is a straight line. Right, and this is also a straight line. Parallel line है तो straight जा रही होगी, right? And ये क्या बन जाती है हमारी? If you all remember, we have started this becomes a transversal, right? और जब ये transversal होती है तो क्या होता है हमारे alternative angles equal हो जाते हैं, right? Yes or no? होते हैं ना? So in that case, अब मेरे पास क्या बन गया? Angle PMQ, right?
is equals to angle CRM. कैसे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? ये तो हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से मैंने ये वाले एंगल्स को प्रूव कर लिया. और जो मैं कॉन्ग्रुएंस का जो कह रही थी ऑल्टरनेटिव एंगल्स, उससे क्या होएगा? एंगल P एंड QM, राइट? PQM, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू एंगल CRM, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेटिव एंगल्स. सो हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट भी आ गया, ऑल्टरनेटिव एंगल्स भी आ गया, 2 एंगल्स आ गए. एंड नाउ अब मुझे पता है कि ये वाली साइड इट्स गिवन BP इज इक्वल्स टू CR, राइट? ये है 60 डिग्री. ओके, नाउ आई नो दिस एंगल इज इक्वल. और यहाँ पे ये एंगल कैसे बनेगा? क्योंकि ये भी बन रहा है तो ये वाली भी 60 डिग्री होगा एंड ये वाला भी ऑटोमेटिकली 60 डिग्री होगा. बाय, बिकॉज ट्रांसवर्सल्स है. तो ये वाले ऑल्टरनेटिव एंगल्स, दैट मीन्स एंगल QPB विल बी इक्वल टू एंगल ACB, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री हो जाएंगे, राइट? दोनों एंगल्स इक्वल है. नाउ आई नो दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री. This I already know is 60 degree. Can I know this angle is 60 degree? Because sum of all the angles is 180 degree, right? So in that case, I got all these triangles as angles as 60 degree. अब सारे angles equal है, मतलब ये वाला triangle क्या बन गया? What will triangle BQPB? It will be an equilateral triangle, जहाँ पे हमारी सारी चीज क्या हो जाती है बच्चा? हमारी सारी चीजें जब साइड्स हमारी एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनको हम इक्विलैटरल बोलते हैं. दैट मीन्स दैट PB will be equal to PQ will be equal to QP. So this side and this side is equal. That also means that अगर BP हमारी equal CR थी तो वैसे ही PQ भी equal है CR, which will say as PQ is equals to CR. अब मेरे दोनों एंगल्स इक्वल है, मेरी साइड इक्वल है. सो व्हाट विल इट कम टू? एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. प्रूफ दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब मैंने प्रूफ तो कर दिया कि ये वाला जो ट्रायंगल है इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल. और कॉन्ग्रुएंसी अगर प्रूव हो जाती है, दैट मीन्स दैट ऑल द साइड्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स CP, हम जो करते हैं CPCT से हम प्रूव कर सकते हैं कि PM इज इक्वल्स टू MC. एज सिंपल एज दैट. सो बच्चे, इसमें हमारे को क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में होती है दैट इज एनफ. सो इट्स गिवन दैट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. फिर पैरेलल बताया हुआ है तो पैरेलल है तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स की हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. जब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, पैरेलल एंगल्स हैं तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स भी इक्वल हैं. उसके बाद ट्रायंगल जो है हमारा ये वाली साइड इसके इक्वल है, दैट मीन्स दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS. बिकॉज एंगल साइड इंक्लूडेड एंगल नहीं है, दोनों एंगल्स अलग अलग हैं, उसकी इंक्लूडेड साइड नहीं है, साइड अलग है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग AAS रूल. Alright, so that's it. That was the way you have to solve this question. So now let's move on to multi-choice question. Let's see who all are there live and solve this question all together. So it should be in a fraction of seconds and the reasoning should be done properly. Alright, so let's see. Two sides of a triangle of length of 5 centimeter and 1.5 centimeter each. तो दो sides हमारे को triangle की दी हुई हैं. The length of the third side of a triangle cannot be, मतलब वो क्या नहीं हो सकती. So anyone who knows the answer for this, क्या हो सकता है? Can it be? It cannot be 3.6. क्या ये 3.6 सेंटीमीटर नहीं हो सकता? 4.1 नहीं हो सकता? 3.8 नहीं हो सकता? 6.9 नहीं हो सकता? इनमें से कौन सा ऐसा है कि वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता? So any answers? I can see so many of you are live right now. Any answers? Any guesses? What you think can be the answer? So it's the time to think over it of this question. Alright, so I got one answer as 4.1 cannot be done. Okay, B parts. Let's see. Anyone else who want to try this? Okay, 4.1 cannot be done. Okay, anything else? हम ये कैसे कह सकते हैं? Okay, एक triangle है. We have been given two sides of a triangle all together. Right, guys? So मेरे पास A side है. एक side को मेरे को बता दिया है कि 5 सेंटीमीटर है. Okay.
Can you hear me, guys? All right. So right now we were talking about, I'm really sorry for today. All right. So we were talking about when the two sides are added, it cannot be greater. So 5 centimeter. All right. So it says 5 centimeter plus 1.5 centimeter gives us the value of 6.5 centimeter. तो 6.5 centimeter से बड़ा तो वो हो ही नहीं सकता. All right. So I hope it is clear now. All right, moving on to the next question. Let's see how are we able to solve the next question. Now, it's given that the triangle ABC are congruent to FDE. So, हम DEF normally बोलते हैं, but इसमें change करा हुआ है. So, just be careful when reading the question. All right. So, it says FDE. And AB is equals to 5 centimeter. Angle B is 40 degree. Angle A is 80 degree. Angle B means this is 40 degree. And angle A is 80 degree. All right. So it's given which of the following is true. So इससे क्या चीज true हो सकती है आप ये बताओ. अब देखो angle ये है अगर congruent है that means angle A would be equal to angle F that is 80 degree. AB would be equal to DF that is 5 centimeter. Angle B will be equal to angle D that is 40 degree. तो angle D 40 degree हो रहा है. Angle क्या और side कौन सी है? ADF is 5 centimeter. So कौन सा ऐसा है जिसमें कह रहे हैं DF is 5 centimeter. Angle जो हमारे पास F दिया हुआ है या E तो F हमारे पास 60 डिग्री. एंगल E हमारे पास 60 डिग्री आ रहा है या नहीं. So let's see what do you think the answer would be. So the right answer for this one guys is angle E is 60 degree and DF not DE yes is 5 centimeter. Why do we get 60 degree? Because we know the sum of all the angles of a triangle is 180 degree and we'll subtract the sum of 80 degree plus 40 degree. That gives us the answer of 60 degree. मतलब कि angle C जो E जो है that will be 60 degree and we know DF is 5 centimeter. All right, very good, Ashish. You did the right job. The option B is the right one. So let's see who all can do this one. So it says in the triangle ABC, BC is equals to AB, angle B is equals to 80 degree. We need to find out the value of angle A. Anyone who can give this answer quickly? Let's see. How are we able to solve this question all together? So एक triangle हमारे को बताया हुआ है. So again, let's make a question का rough work A, B and C. Okay, Dash. All right. So ABC is equals to AB. ये दोनों sides मेरी equal हैं and angle B is equals to 80 degree. अब बच्चा ये दोनों sides equal है मतलब हमने एक property learn करी है triangles में when the two sides are equal then the opposite angles towards them. तो उसकी तरफ जो facing angles होते हैं वो भी equal होते हैं. तो हम ले लेते हैं let this angle be x. Right. Okay. So we got 100 degree. Let's see. So इसके मतलब हुआ angle A is equals to angle C is equals to x degree. So that comes 180 degree minus of 80 degree plus x plus x. So that comes 100 degree minus of 2x is equals to 0, right? इनका हमारे पास सम होना चाहिए. So 2x is equals to 100 degree. X is equals to 50 degree. So you got the answer as x is equals to 50 degree. So right option is the C option. All right. Easy लग रहा था ना directly subtract करके हो जाएगा but no guys just remember that's why I'm telling you whenever such questions are make a rough sketch. उससे समझो कौन सी sides को equal कह रहा है उसके opposite कौन से angles होंगे. Directly questions नहीं होते and that is what they make us get confused in. All right, moving on to the next one. Let's see. In a triangle PQR, if angle Q is equals to 90 degree, then what happens? Is PQ the longest side? QR is the longest side? PR is the longest side? Or none of these is the longest side? Okay, triangle है, that means एक angle 90 degree. All right, so one angle is 90 degree. That means it's what type of angle it is? It is a right angle triangle. So let's make that in a form of a right angle triangle in a rough work. ठीक है. So ये क्या आ गया? P angle Q जो है वो है हमारा 90 degree. So opposite side सबसे बड़ी कौन सी होगी? हमने लेबलिंग भी अच्छे से करनी है guys. हमें ये देखना है कि लेबलिंग कहाँ पे करी हुई है. All right. So what is happening is now I know which is the longest side. P. क्योंकि hypotenuse is always the longest side in a right angle triangle. That means PR is the longest side. So have everyone got the right answer?
All right, so right answer is a C option. Very good. Let's move on to the next option. Let's see who all can give me this answer. All right, in the triangle ABC and PQR, ABC एक triangle है, PQR एक triangle है. Okay, so we have this triangle ABC and we have a triangle PQR. अब AB is equals to AC हमारे को बताया हुआ है, angle C is equals to angle P. Okay, now an angle B is equals to angle Q. Okay, are these two triangles isosceles but not congruent? Are these isosceles as well as congruent, or they are congruent but not isosceles, or neither they are congruent nor they are isosceles? What do you think would be the answer, guys? देखते हैं, चलो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. वो कह रहा है ए बी इसके इक्वल है, मतलब कि ये तो इसके इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल तो होगा. We have an option. Next says कि this angle is equals to this angle. Okay, but ये वाला अगर angle isosceles है और congruent होता है तो उसके exactly corresponding angles equal होने चाहिए, right? But now when I see here the corresponding angles are not equal. Instead some other angle are equal. So can we call it congruent? We cannot call it congruent. Yes, that's right. So it is an isosceles triangle, but it is not a congruent. So we cannot prove its congruency because the angles which are given, they are not corresponding angles. They are some other angle altogether. Yes, guys, good. Let's see who all can give this answer. Everyone ready? Okay, so here it's a right angle triangle with angle A is 90 degree, angle B is 35 degree. Then what is angle C? Angle C क्या होगा? We know one angle is right angle. That means क्या है? That is 90 degree. Very good. The other angle I know is 35 degree. Third angle निकालना इतना easy हो सकता है. What would be the answer, guys? Okay, so what would be the answer for this one? All right, you didn't understood the previous question. Let me go back 1 second and tell you how we do it. बच्चा देखो इसके अंदर triangle है ना, triangle हमारे को दिया हुआ है. Let me make a red color pen so that you can see it properly. So एक triangle है A, B, C. Okay, और दूसरा triangle है हमारे पास P, Q, R. Angle C जो है वो equal है angle P के. तो ये वाला angle इसके equal है. Okay. अब एंगल B जो इसके साइड पे जा रहा है दैट इज इक्वल्स टू एंगल Q. ओके, तो ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है. इज द थर्ड साइड गिवन टू अस दैट AB इज इक्वल्स टू PQ? ऐसा कुछ दिया हुआ है? नहीं, उसने दिया AB इक्वल्स टू AC. उसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स बताए, तो कॉन्ग्रुएंसी में मिनिमम वी नीड 3 साइड्स. तो हमारे पास इस थर्ड साइड का तो रिलेशन नहीं पता. फर्स्ट रीजन. सेकेंड रीजन इज आइसोसेलेस क्यों है? क्योंकि इस ट्रायंगल की उन्हें दोनों साइड्स बताई हुई है, इस ट्रायंगल से रिलेशन नहीं बताया हुआ. सो इन दैट केस व्हेन आई डोंट नो द रिलेशन ऑफ द थ्री ऑफ द थिंग्स आई कैन नॉट प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी. फर्स्ट थिंग. ओके, सेकेंड, ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है, दैट मीन्स दे आर आइसोसेलेस, बट वी कैन नॉट से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज द रिलेशन विद द नेक्स्ट ट्रायंगल इज नॉट प्रूवन टू अस. आई होप इट इज क्लियर नाउ. All right, moving on to the next question. Anyone who got this answer in the meanwhile? So triangle is 90 degree and angle B is 35 degree. I need to know the angle C. एक 90 degree है, एक 35 degree. 90 plus 35 becomes 125. 125 को minus करेंगे किस में से? 180 में से. What would be the answer, guys? The answer would be B, 55 degree. Very good. कैसे करा? एक बार दोबारा देख लेते हैं. 180 डिग्री सम होना चाहिए. ये वाला एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री, दो की पता है, थर्ड की हम 180 से माइनस करके निकालेंगे, जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस और 125 डिग्री. दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ 55 डिग्री. ऑलराइट, सुपर्ब, गुड. Let's move on to the next question. Let's see how are we going to solve this. So now it's a subjective question altogether. Objective हमारे खत्म हो गए हैं, अब हमें करना पड़ेगा subjective question. So everyone ready? How are we going to understand the questions? How are we going to solve them step by step? All right. Subjective question में बच्चा आपको हर एक चीज लिखनी पड़ती है step wise, तभी हम उस question के ऊपर पहुंच सकते हैं. ओके, इट्स नॉट एन ऑप्शन जहाँ पे आपको दिए हो, आपको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है. तो प्रूफ के लिए आपको प्रॉपर स्टेटमेंट्स और रीजनिंग लिखनी पड़ती है. दैट इज नोन एज सब्जेक्टिव. सो टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी एंड बी सी.
A and it's a median AM of a triangle ABC representing equal sides. मतलब हमारे को बताया हुआ है कि AB is equals to PQ. Okay, it's given that BC is equals to QR. और हमारे को ये बोला हुआ है कि AM is the median that is there and which is equals to the next median that is PN. ठीक है, हमारे को ये वाली sides equal दी हुई. Now, what they want us to know? They want us to know that this triangle, this one, is congruent to P, Q and N. So मेरे को ये वाली चीजों को prove करना है, उनकी congruency prove करनी है. So how are we going to do this? Let's see. Okay. अब मेरे को जब ये बताया हुआ है AB is equals to PQ. So simple, एक चीज तो मेरे पास given नहीं है. I'll make it equation number 1. Second मेरे को क्या बोला हुआ है कि BC is equals to QR. मुझे ये वाली पूरी साइड इसकी इक्वल है और ये बताया हुआ है M जो है वो उसका मिड पॉइंट है. That means if it is given that BC is equals to QR, मतलब कि half of BC, that means half of BC is equals to half of QR, because वो उसका मीडियन है. मीडियन क्या करता है, दोनों को एंड पॉइंट्स में मिड में डिवाइड करता है. दैट मीन्स आई हैव टू इक्वल पार्ट्स. नाउ दिस पार्ट वुड बी इक्वल टू दिस ऑफ हाफ एंड दिस पार्ट वुड बी इक्वल टू दिस ऑफ हाफ. इजी, राइट? So I know now this is equal. That gives me that BN is equals to QN. So from here I'll get the second equation कि मेरी ये वाली side इस side के equal है. Alright. So far I have got two sides, right? What are they telling us? They are already given that this side. What is this side? AM is equals to PN. That is the third equation that is given to me. Now with all the three equations that I have made, 3 points, that means side, 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 then the three sides are equal. When all the sides are equal, that means they are congruent by side, side, side property. So this side and the third side is this. That shows that this triangle is congruent to this triangle altogether and hence I have proved the congruency. Alright, जितना क्वेश्चन में दिया होता है ना बच्चा वो हमेशा इनफ होता है. तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. वी हैव प्रूव दैट दिस कॉन्ग्रुएंट इज दिस टू दिस ट्रायंगल. अब वो कह रहे हैं बड़े वाले ट्रायंगल को प्रूव करके दिखाओ कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. सो बड़े वाले जब ट्रायंगल को मैंने प्रूव करना है तो उससे पहले क्यों ना मैं इस कॉन्ग्रुएंसी को जो प्रूव करा है उससे एक पॉइंट ले लूं. व्हाट विल आई टेक द पॉइंट? व्हेन आई नो दिस ट्रायंगल, द ट्रायंगल ऑफ ABM is congruent to triangle PQN by SSS congruency rule. That means that angle B will be equal to angle of Q. क्योंकि congruency का मतलब क्या होता है? CPCT, that corresponding sides, corresponding angle which is congruent triangle of congruency of a triangle is proven when the corresponding sides are also equal, right? So that means this angle is equal to this angle, right? So I know these two angles are also equal. और मेरे को जब ये वाला एंगल इक्वल पता है, मुझे ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि AB is equals to PQ. That was given to me. It was given that BC is equals to QR, which was given to me. दो चीजें गिवन थी, एक चीज मैंने निकाल ली. अब मैंने क्या निकाला? ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड. मतलब क्या बना? साइड, उसके इंटरनल एंगल एंड साइड. सो बाय SAS आई कैन प्रूव दैट दीज टू आर आल्सो congruent. So इससे मेरी सेकंड पॉइंट की congruency भी प्रूव हो गई. So what I'm using the first part, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले सॉल्व करी उसको यूज करा, उसमें से मैंने एक एंगल की वैल्यू निकाल ली. क्योंकि इंटरनल इन दोनों ट्रायंगल में बच्चा क्या चीज कॉमन है? ये एंगल ही तो कॉमन है. जो बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल में क्या कॉमन आ रहा है? एंगल कॉमन आ रहा है. सो वी आर यूजिंग वॉट एवर इट्स रिक्वायर्ड. हमने वो यूज करा, उससे प्रूफ करके हमने नेक्स्ट चीजें प्रूफ कर दी. Alright, so I hope it is clear and you are able to solve both the options all together. Yes, moving on to next one. If a triangle ABC, angle B is 60 degree, angle C is 80 degree. तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि एंगल अगर बाइसेक्ट करके मिलता है एक पॉइंट बीच में, so what happens? The happening is that we need to find out this angle altogether. बस ये चीज हमें करनी है. तो let me label it. This says ABC is a triangle with angle B. Angle B क्या दिया हुआ है हमारे को? 60 degree. Okay, and angle C is given to me 80 degree. ये मुझे भी दिया हुआ है. Right guys, I know both the angles. मुझे निकालना क्या है? Let me make that in red color कि ये वाला I है और मुझे ये वाला एंगल निकालना है.
ओके ये वाला एंगल निकालने के लिए फर्स्ट चीज क्या है, जब मेरे को क्वेश्चन को समझना कैसे होता है ना बच्चा, हाउ दिस डिफरेंट प्लेटफॉर्म इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी फॉर योर किड्स. दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव यू द प्रूफ विद द लास्ट क्वेश्चन ऑल टुगेदर. सो सी आई वांट टू नो दिस एंगल. एंगल कब पता चलता है ट्राइंगल का, जब मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता हो. बिकॉज आई नो सम ऑफ द ऑल ट्राइंगल्स इज 180 डिग्री, तो मैं थर्ड एंगल निकाल सकती हूँ. दिस वन वी हैव लर्न सो फार. यस. नाउ हाउ विल आई डिटर्मिन इन द एंगल ऑफ बी. एंगल पूरा भी दिया हुआ है मुझे, बट क्या मुझे एंगल आई बी सी निकाल सकती हूँ? Yes, surely I can do it. Why? Because it's given it's bisects. That means it will be half of angle ABC. इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब ये किस में कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो मीन्स ये क्या होगा, हाफ ऑफ कितना है 60 डिग्री, दैट बिकम्स 30 डिग्री. दैट मीन्स नाउ आई नो एंगल आई बी सी इज 30 डिग्री. सिमिलरली यही चीज मैं दूसरी साइड ऑफ द एंगल में लगाती हूँ. क्या करेंगे हम कहेंगे ओके एंगल आई सी बी ओके इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी. क्यों? क्योंकि इट्स गिवन दैट बाइसेक्ट्स इट एंड द बाइसेक्टिंग पॉइंट मीट्स एट द एंगल. तो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब ये वाले जो दो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. That means it would be half of 80 degree. That becomes half of 80 degree is 40 degree. I can write it directly, right? You are so grown up, you know it now. So becomes 40 degrees. जिससे मेरे को मिल गया angle ICB is equals to 40 degree. अब मेरे पास दोनों एंगल आ गए, एक 30 degree, एक 40 degree. So what I need to know? I need to know the angle of BIC, which is equal to 180 degree minus 30 degree plus 40 degree. So what's the answer, guys? Anyone who can give me the answer? It would be 180 degree minus 70 degree, which comes as 110 degree. Superb! Great job! So it's easy. बच्चे जो क्वेश्चन में दिया होता है ना उसी को ही यूज करते रहते हैं और हम ये देखते हैं और वहां पे जाने तक के लिए हमें पहले देखना पड़ता है कि हमें लास्ट कहाँ पर पहुंचना है. व्हेन आई नो वेयर आई हैव टू रीच, व्हाट आर दे आस्किंग, सो फॉर दैट दिट विल हेल्प अस. व्हेन विल दैट हेल्प अस? विद नॉट ओनली जस्ट अ रफ फिगर. तो रफ फिगर आपने देखा मैंने हर क्वेश्चन में बनाया ताकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकूं, साथ में मैं भी समझ सकूं कि क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं और कैसे उसको फॉलो करना है. Alright guys, so I hope you all will enjoy this session and you're being connected. Kindly subscribe to the channel and press on the bell icon so that you know when is the next update, when is a new chapter coming all together, and the comment box is open for you. You can give us suggestions that what you want us to teach you in the next session. Alright, and then guys, take care, be safe, and thank you so much for being connected. Bye guys.